Hello, everyone, and welcome to the Holistic 360 Degree Health Podcast with Dr. Prasad. I'm your host, Dr. Aman Kapoor, and I welcome you all to this podcast series. This podcast series is an initiative to promote a holistic thought about healthcare. Now, holistic thought means everything that relates to your physical well-being, mental well-being, emotional well-being, spiritual well-being, in all well-being in a 360-degree perspective. And joining me is an eminent expert in this field, Dr. Prasad Deshpande. Dr. Prasad is the head of Bangalore, and he's been heading Madhavbag's training team, Karnataka region, and is one of the preventive cardiologists who's been focusing on prevention and reversal of lifestyle diseases. Now, today we are going to talk about a very important topic, an area that is one of the root causes of lot of diseases that we see around. That is obesity. So, Dr. Prasad, welcome to this episode today, and thank you for taking this initiative and for this topic of discussion today, suggesting to discuss on obesity. Now, obesity, or as we say in Hindi, mein motapa. It's a weight gain, motapa badna, and there is a huge burden not just on your body, on your heart, but on your whole society is also getting burdened by obesity. Now, Dr. Prasad, I want to ask you, you suggested this topic of obesity, right? You wanted to discuss about obesity. Now, why did you want to start discussing about obesity before even talking about, let's say, heart health or diabetes or any other things that are most commonly talked about? Why obesity, and why are you so passionate about this topic? Can you please tell us? See, Mo, first of all, thank you very much because as we have seen, there are a lot of questions being asked on obesity after watching our first episode, and yes, definitely, obesity is one of the most important factor which is going to cause a lot of different other disorders, like we call it as a secondary complications, which always includes type 2 diabetes, hypertension, blockages, heart attack, or cardiac other cardiac disorders. All this includes, and the if you really understand the root cause of all these disorders, uh, it is obesity. Basically, the increased weight on your overall body, and that is how it will impact and create a diseases which will really sometimes take your life. So why I am passionate, because when you are talking about holistic health, when you are talking about uh, treating a diseases completely, then definitely we need to understand the root cause of each and every disease, and that is very much important. If you ask me, the root causes of all major disorders, rather, nowadays I should say that maximum disorders are being started with obesity. Okay, when your weight gain starts, when that ratio get disturbed, then yes, you are on the verge to get some big diseases, big named diseases. So the moment your BMI started going up, then it is a alarming sign where you have to wake up and take some action or steps to reduce your weight. Okay, so that is the reason, because as you said, yes, it is creating burden on our body, on our heart, on our all the organs, because when we are talking about overweight or overload, so every organ is defined its uh, job profile, and considering it,
So when it is overloaded, then definitely that starts showing some symptoms. Okay, so then it may be any organ of your body. It's not every time heart should stand up and say I am in a problem. Okay, so any organ of your body that will be in a problem, and that will show some symptoms. So yes, considering all these things, we have to take care about our weight. And I personally feel this is always neglected, ignored uh, topic. And many of us, I have seen so many patients, they don't consider obesity as a disease. That is the Mhm. biggest problem nowadays. And that we need to make sure. And with probably with this podcast, uh, the audience will understand that obesity is not a disease. Now, sometimes we need to consider it as a syndrome, because it is the main. I always tell. I can translate it in Hindi. तो ये तो महाद्वार है, हर एक बड़े जो रोग है, उनका महाद्वार हम ओबेसिटी को मोटापे को बोलते हैं. That is how it's the entry gate, entry pass. After obesity only you get maximum times all these kind of things. So yes, you need to understand about the obesity. You need to understand how it has to be taken care, how to reduce weight, what is the right way to deal with it, what all the holistic approaches, what we can do to reduce weight, to treat obesity. So this is all required. People should understand, and then only we can prevent all these kind of disorders which are creating a problem in our society. So that is the reason, Dr. Aman, I wanted to discuss about this, and probably this is the first step from where we can start our prevention. Fantastic, fantastic perspective, Dr. Prasad. First step is looking at overweight or being overweight or being obese. Now, Dr. Prasad, India mein though, like you rightly said, it's not considered very serious by people. People say कि ये तो खाते पीते घर का है. That's the kind of thing that we say कि खाते पीते घर का है. So being on the heavier side is seen as a sign of being prosperous, and not other way around. So somebody who is more obese, who is overweight, is generally seen and is joked about as if this person is more prosperous. No, but recently, see, in my practice, many a times, I have started doing this, because I have started using the word, uh, rather calling them healthy, rather I have started calling them fit. ओके, Hmm. सो सी, कोई भी अगर आपको ऐसा बोलेगा कि नो ये तो हेल्दी है, वेट ज्यादा है तो ओबेज है, ओवरवेट है, तो अरे ये तो हेल्दी है, खाते पीते घर का, व्हाट यू सेड. So if it is so, then better to use the word creating a confusion. Let's start using the word fit. सो आर Hmm. यू फिट? सो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके हिसाब से जो डेफिनेशन है, हेल्दी बोलते हैं ना जिसको, जो Ah, मोटा है वो हेल्दी है, right. गोल मटोल है, तो बेटर डूइंग दिस. सो यूज द वर्ड फिट. So irrespective of your weight or overweight, if you are fit, then yes, you are always acceptable from your body organs. Okay, otherwise, yes, you are inviting the problems. So, Dr. Prasad, before coming to the numbers, before we talk about numbers, there are a couple of questions that I have. I thought I would ask you, and this is coming from a layperson perspective, a common man's perspective. Weight loss, there are a lot of videos on weight loss, there is a lot of discussion on weight loss, but most of the time this is related to cosmetic appearance. You lose weight because you can fit into better clothes, you can look better, etc., etc., etc. The motivation of weight loss for people is cosmetic. Now, uh, so I want your opinion on that. Yes, cosmetically it definitely affects, but
what is your take on cost people who talk about कि weight loss इसलिए करना है क्योंकि अच्छा दिखना है? That's the one thing. And the second thing is you mentioned about BMI. So I wanted to understand from you. I mean, I understand being a healthcare practitioner, but for a lay person perspective, a common man, what exactly is BMI and what should they understand from your point of saying when the BMI is high or BMI is normal? What is exactly the meaning of it? So these two questions, over to you, Dr. Prasad. So addressing the first question, definitely अच्छा तो दिखना है भाई, अच्छा दिखना है, अच्छा अच्छे कपड़े पहनना है, और वो अच्छे कपड़े पहनने के लिए मुझको फिट रहना है. दिस इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल, देर इज नो डाउट इन दिस, बट only this is a motivational factor. We can definitely tell them, okay, anybody want to reduce their weight to look good, yes, this is a best way to start this. But the moment you start this, और थोड़ी दिन के बाद if things doesn't work, then ये मोटिवेशन खत्म हो जाता है. इसलिए अगर आपको अंदर की चीज अगर आप समझ जाए, इफ यू अंडरस्टैंड the internal factors which are creating problem when you are obese, when you are overweight, then probably that will create a good impact to reduce weight. That is the real motivation, I would say. So these things which will give you motivation, always important. These things, understanding the disease, understanding why I am doing this is very much important. और मुझे लगता है कोई अच्छा दिखने के लिए कर रहा है तो अच्छी बात है, वो तो एक एक फैक्टर है. पर मोर इम्पोर्टेंटली, जब मेरे बॉडी के अंदर अगर वो मोटापा हार्ट को तकलीफ दे रहा है, वो मोटापा मेरे लिवर को तकलीफ दे रहा है, वो मोटापा मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम्स को तकलीफ दे रहा है, वो मोटापा मेरे किडनी के ऊपर प्रॉब्लम कर रहा है, वो मोटापा मेरे घुटनों के ऊपर प्रॉब्लम कर रहा है, मेरे बॉडी बैलेंस के ऊपर प्रॉब्लम कर रहा है, तो डेफिनेटली हमें उस मोटापे को बहुत सीरियसली लेना है और इन वजहों से हमें उस मोटापे को कम करना है. तो यस, अच्छा दिखने के लिए करना है, साथ ही वी हैव टू वर्क on weight loss for these major reasons. Yes, point number one, when I tell that कि we have to take action, तो कोई भी रेस में अगर मुझको दौड़ना है तो मुझको खड़ा कहाँ रहना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, that I need to know. Okay, so from where that race starts, okay, so that is how the BMI comes into a picture. Yes, weight is there, वेट तो है, पर हर एक का मैं वेट को ना स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकता, मैं वेट को जनरलाइज नहीं कर सकता. वेट इज एन इंडिविजुअल फैक्टर है, तो हर एक का वेट अपने अपने हिसाब से अलग अलग है जो नॉर्मल है. पर वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो उसमें एक रेशो आता है, उसमें एक फैक्टर आता है. दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स. तो हमारी जो बॉडी है, बॉडी की एक हाइट है, उस हाइट के हिसाब से एक वेट मेरे बॉडी का कितना होना चाहिए, कंसीडरिंग द बॉडी बैलेंस से लेके बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शनैलिटी तक, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस, इज ऑन बीएमआई. ओके, तो अभी जब मैं बीएमआई के बारे में बात करता हूं तो डेफिनेटली जब एक एक कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का एक हाइट और एक वेट होता है और उनके ऑर्गन्स की फंक्शनैलिटी उस रेशियो के हिसाब से होती रहती है. दैट रेशियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. Okay, so the moment how that child starts growing, okay, step by step, that child starts growing, that BMI starts working. Okay, so at certain age our height uh, growth stops, but many a times after that 25 30 35 के बाद वेट गेन शुरू हो जाता है बहुत बार. Reasons we will discuss later. But when that weight gain doesn't match with your height,
then the problem starts. Okay, तो always I tell, कोई भी अगर आप एक लकड़ी या एक छड़ी आप खड़ा करते हो तो उसका एक बैलेंस है। ओके, अगर उसकी हाइट ज्यादा लंबी हो गई तो भी गिर जाएगा, और अगर उसका मोटापा भी, मतलब उस लकड़ी का मोटापा उसके हाइट के हिसाब से अगर सही ढंग से मैच नहीं रहेगा वो रेशो, तो भी वो गिर जाएगा। तो बैलेंस से लेके बॉडी फंक्शनैलिटी से, ऑर्गन के फंक्शनैलिटी से, हर एक चीज बीएमआई के ऊपर डिपेंड है। इसलिए जब भी आप वेट, सिर्फ वेट देखते हो तो सिर्फ वेट मत देखो, ज्यादा हुआ कम हुआ, वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो आपके बीएमआई के ऊपर डिपेंड है। तो यूजुअली यंग अडल्ट जो बोलते हैं हम अडल्ट्स में, जो मेन है, उनका बीएमआई 25 होना बहुत जरूरी है। 25 इज द नॉर्मल बीएमआई। और वीमेन, उनमें 23 to 25 के बीच में रहना जरूरी है। तो दिस इज द स्टैंडर्डाइज्ड BMI which is defined. Okay, basically, always I tell कि your BMI should be 25. तो if 25 से 27 के बीच में अगर आपका BMI है, तो yes, it is alarming, and आपको एक्शन लेने की जरूरत है। This is what you need to understand when you see your BMI. Okay, so what exactly you have to do? You have to, in this range, you need to take some action, like uh, changing your lifestyle where exercise includes, right? So you start going a morning walk, or you can add some physical exercises where muscle exercises are included, stretching exercises are included, or some cardio exercises are included. So this you can add. So second thing, dietary changes, in time diet, carb free diet, you start doing this, and good sleep. This will help in this category, this range. If your BMI is above 27 to 30, so now this is a time to intervene. uh, Actual doctor should intervene and understand the reasons why the weight is increasing, and then it has to be treated in a proper way. Okay, so the weight reduction should be done under the observation of the doctor. And if your BMI is above 30, then you are already inviting the secondary complications like diabetes, some cardiac disorders, some lipid disorders, all this. So where doctor has to intervene, and he has to take some serious weight loss options, treatments, and strictly within 3 months, within 6 months, that weight has to be reduced. Okay, so this is how we need to approach considering on our BMI. So only thing is how to calculate that BMI. Nowadays it becomes very easy. No need to go to doctor. Just you Google it. Type BMI calculator and you will get it. Okay, so you need to add your age, you need to add your gender, you need to add your height in centimeters, and you need to add your weight in kg, and tell the Google to calculate. So whatever the BMI, it will show the range from green to red completely, from overweight grade 1, grade 2, then getting into a obese category 1, category 2, category 3. This is how the gradations are made. And this BMI, this will tell you what level of action, what intensity action you have to take to reduce your weight. Okay, so BMI definitely will help you to reduce your weight at what level of intensity. Okay, Dr. Prasad, fantastic point of view that you have shared with us. Now, you know, looking at the things that you said, you talked about different zones of BMI. People can go online. So, my dear friends, if you're watching this, I would suggest whenever you have just finished watching this episode, uh, go online, check your BMI, put your height, put your weight, put your height in centimeters, right, Dr. Prasad? So put your height in centimeters. Yes, yes, yes. Height in centimeter, weight in kg.
weight in kgs, check your BMI, and have a look at it, keep a track. So losing your weight, like Dr. Prasad said, is good. It helps you look good. It makes you, look fantastically more beautiful, more handsome, more smarter, no doubt about it. But it makes your insides also look beautiful. Your body starts becoming more beautiful inside, because the fat that is stored inside is going away. Your organs, your heart, your brain, your bones, your joints are going to say thank you to you, because they feel less burden, right? Nobody. So some of you are working at office, I'm sure, who are watching, working in corporate sector, nobody likes additional burden, right? So like that only, your body But also. one more option, which we need to understand while why we need to uh, think about weight loss or work on the obesity or overweight. So one more aspect is, yes, definitely looking good is there. Physiological changes or problems we are going to get if we are overweight. Yes, definitely it is there. More importantly, what I have seen, I have observed is the patients who come to me in my consultation. So if the person is overweight or if he is obese, grade one, grade two, any category obese person is there, I have seen the level of confidence. So the moment your weight start gaining, your level of confidence starts reducing. So that is I have seen, and there are more of lack of confidence, getting into depression very fast, anxiety attacks, panic attacks. All these things are more common in obese. So this one more thing we need to understand. If you want to give a good results, if you want to give a good performance in whatever you are doing, so your mental and physical health should be very strong. And if you are obese, so your physical health is definitely compromised. With that, your mental health also be compromised. So probably this is the good reason to reduce weight, work on obesity. Fantastic, fantastic. It's very, very over, very valuable points that you've added also, because physical health, along with that, mental health also gets affected. Very good points. The confidence level increases, improves, and all. Now, Dr. Prasad, with a changing lifestyle, and I think everybody understands, stress levels have increased, the diet and food has changed, lifestyle has changed compared to maybe few decades earlier, and compared to maybe what our parents were living, the kind of life they were living, and the kind of lifestyle that they had. Compared to that, the lifestyle now is more stressful. Food and diet changes have taken place now. Because of that, the number of people who are going overweight, obese, morbidly obese, those areas is drastically increasing. Now, what I want to understand from you is the what is the scenario, the real scenario with respect to Indian data or maybe global data, and where is India fitting over there, and what is the impact that it is causing? One very nice observation I will tell you. See, last around 10 years back, uh, we were thinking that India will become a diabetic hub, diabetes capital, Right. and that has happened. And nowadays, maximum numbers are there in India. Diabetic patients numbers are there in India. After that, it has been said that the maximum number of patients, cardiac patients, will be there in India. And yes, we are almost reaching to that numbers. Uh, so what I have observed is, we need to understand, if you check a global scenario, yes, globally, uh, weight gain or obesity become vastly spreading. Okay, so nowadays अभी वो हम सोशल बर्डन जो बोलते हैं ना, उस हिसाब से आज ओबेसिटी बढ़ रहा है ग्लोबली. बट अपार्ट फ्रॉम ग्लोबली,
if you consider Indian numbers last around 15 years may drastically changed. Okay, so there are around अगर हम numbers की बात कर ले, so there is a data with me, the National Family Health Survey, which was done in the year 2005-6. At that time, around 9.3 Indian men were suffering from obesity and overweight. But if you consider the same number in 2015 and 16, that has become 18.9%, means almost double. Double, double. Okay, so this is the impact. We will come later about reason why and all, everybody knows about it, but this is the reality, this is the true numbers, facts which we need to understand and accept it first. In 2019 and 21, 19 to 21, the survey with NFSH, so this is the number is reached to 22%. Wow. In Indian men only I am talking. If you consider the same numbers with the same survey in women, in 2004 2005 and 6, the number was 12.6% women are suffering from obesity and diabetes, obesity and overweight. In 2015 and 16, it is 20.6%. And if you consider in the 2019 to 21, it is 24%. Overall, if you consider in 15 years, approximately in 15 years, the burden has exactly doubled. You're right. Right. Okay, definitely it itself means the we are inviting double the other diseases, like as I said, diabetes, hypertension, cardiac disorders, blockages, all these definitely things will increase, these all numbers will be doubled. Okay, so when we need to understand the impact or the disease burden, so we need to prevent it. There are different methods which will help us to reduce the weight or treat, proper treatment will be there, but more importantly we need to understand how we can prevent. Because why I am talking about prevention, because if you see the numbers of child welfare, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो चाइल्ड वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट है, वहां के नंबर्स ये बता रहे हैं कि आज के दिन में चाइल्ड ओबेसिटी ये बढ़ गई। ओके, आज छोटे छोटे बच्चों में ओबेसिटी आज दिख रही है। सो दिस इज वेरी मच अलार्मिंग कंसिडरिंग अवर फ्यूचर डेज। अभी फ्यूचरिस्टिकली अगर हम अब बात करेंगे, जो हम यूजुअली बोलते हैं ना कि आज के जो बच्चे हैं कल के नागरिक होंगे, तो नागरिक तो हेल्दी रहने चाहिए ना। अगर कल का नागरिक आज से ही बीमार है तो दैट बिकम्स वेरी बिग प्रॉब्लम। So, Dr. Aman, just I wanted to tell that ki obesity nowadays in India has become a significant public health concern. ओके, तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि जो नंबर्स मैंने आपको अभी बताए, तो ये तो हमारे नेशनल हेल्थ सर्वे के हिसाब से दिए हुए नंबर्स है। अगर आप लैंसेट में जो पब्लिश हुए नंबर्स है, अगर वो मैं आपको बताऊंगा तो इट बिकम्स वेरी horrifying, because if you consider India become a third country in the world which is having a maximum number of obese or overweight people. तो पहले यूएस है, सेकंड वन इज चाइना एंड थर्ड इज इंडिया. This is one. Second thing is, more importantly, today in India more than 8 crore people are suffering from obesity. So why I'm using word suffering, because we need to understand the obesity is itself is a disease. And उन 8 करोड़ में 1 करोड़ से ऊपर आज बच्चे हैं. So this is more terrific. So when we understand this, and one more thing I want to quote here, because
आज के दिन में जो बच्चों के ऊपर जो बर्डन जो हम डाल रहे हैं ना, मतलब Right. पढ़ाई का बर्डन, जितना हम कॉन्शियसली द Hmm. पेरेंट्स आर सीरियस अबाउट देयर स्टडीज या देयर पैशन फॉलो करने के लिए जो कुछ आज जद्दोजहद दिख रही है पेरेंट्स में, वो उतना न्यूट्रिशन के बारे में, उतना हेल्थ कंसर्न्स के बारे में, या पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट वेट गेन के बारे में नहीं हो रहा है। बिकॉज यहाँ तो अलग लेवल पे आज न्यूट्रिशन देना हम देख रहे हैं, उसमें फेक न्यूट्रिशन के बहुत से चीजें आज हम देख रहे हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इट्स अ ह्यूज टॉपिक अगेन। But more importantly, parents has to wake up now. It's a wake up call, I would say. So if you consider the obesity numbers, और Right. ये मैंने जैसे बोला कि हॉरिफाइंग है, पर ये सभी चीज बताने की जरूरत ये है कि डराने के लिए नहीं है, Hmm. पर मोर इम्पोर्टेंटली हमें फैक्ट्स पता होने चाहिए। फैक्ट जब Right. तक मुझको समझ में नहीं आएंगे तब तक वो इम्पैक्ट समझ में नहीं आएगी उस डिसीज का, और जब तक इम्पैक्ट समझ में नहीं आएगी आई विल नॉट टेक एनी एक्शन ऑन दैट। So if you are a part of that, then definitely, boss, you have to take the actions to treat your disease. Again and again, I am underlining here, obesity, consider it as a disease. Okay, it is not your healthy state. Okay, so probably these are the things which we need to understand. Fantastic points, Dr. Prasad, and very shocking numbers. To be very frankly, what you have shared is I believe it was quoted, published study in one of the very leading journals. That I think in Lancet is the same journal in which it was the one of the first articles about COVID virus was published. One of the world's renowned journal. So in Lancet, this study was published, and these numbers are very high. It is a very shocking amount of numbers that we are seeing over here. People suffering from obesity, and I am also one of those who are suffering from obesity. 8 crore Indians, and 1 crore out of that are children. Imagine the amount of weight that we are carrying on ourselves by being obese. Now, Dr. Prasad, one, when we are talking about educating people, when we are talking about understanding education, see, weight loss, lot of people want to do weight loss, but the issue is that when uh, people think about going in for weight loss, some of them go in for a crash diet, some of them work on uh, just getting into gym for a few days, and after a few days of going to gym they realize कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, they leave it. So, losing weight is a challenge that lot of people are facing this right now. Uh, to overcome this challenge, the most important thing is to have the right knowledge and the right means to overcome the challenge. If you have to overcome anything, there it has to have the right method to do it. Now, Dr. Prasad, in this you have taken the means of educating people about obesity and educating people about weight loss. Now, when we talk about weight loss as perception, as such, um, before we go to the weight loss area, I want to ask you, uh, what are the biggest challenges people face with respect to obesity and weight loss? You see so many patients. You are a preventive cardiologist. You work on the field of heart disease, diabetes, reversal. I'm sure you must be seeing at least few patients daily who are obese or overweight. Now, what are the biggest challenges these patients face? And when you see these challenges coming up in these patients, I'm sure a lot of other listeners will be facing these challenges. So, can you tell us what are the challenges, common challenges that these people face with respect to obesity, either with respect to obesity, with respect to weight loss, and adding on to this is also that there are with these challenges comes a lot of misconceptions that come. So, what are these that you face in your daily clinical practice and in your
or almost 2 decades of experience. Most important thing is, first of all, the biggest challenge is the person he don't want to accept that he is obese. मतलब क्या है, आज के दिन में प्रॉब्लम यही है कि मेरा वेट बढ़ा हुआ है, ये पहले एक्सेप्ट करना, वही एक बिगेस्ट चैलेंज है. एंड आफ्टर दैट, मोर इम्पोर्टेंटली, वंस इट इज, इवन दो इफ यू कंसिडर, यस चलो, you because we can show this is required weight you should have, and right now it is more 5 kg, 10 kg, whatever the exceeded amount is. So even though, second biggest thing is, as I said, it is not been considered, this disease is not been considered as a disease. Third point is, when I was explaining all about the BMI. So third point is, ये तो हम खुद ट्रीट कर सकते हैं, ये तो हम सिर्फ थोड़ा बहुत डाइट, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं. दिस इज वन मोर बिगेस्ट चैलेंज which being a physician I face it, because to make them understand, to make them uh, to trust कि no boss, this is a serious problem, and to overcome you need a proper treatment, a scientific approach which will help you to reduce. Because nowadays there are so many weight loss uh, centers, there are so many people who are working for a weight loss with different means. I don't want to comment on that, but more important, when you are reducing a weight, or when you are adding something, some weight to your body, whatever you are doing with your body, then the person who is treating, or the person who is approaching to deal with it, he should be expert. It is my personal opinion. He should be expert in the sense, he should know the body anatomy, he should know the physiology, he should know what happens when weight gains, he should know what happens when weight reduces. Even though when we reduce the weight, when we weight loss happens, there are some impacts on your body. Considering, keeping that in mind, you have to treat it. So it is not like कि थोड़ा बहुत कुछ कर लिया तो हो गया. It is not like that. ये कब हो सकता है? When you have to do it, when your BMI is in 25 to 26, 27. That's it. That is the time where you can yes, play with little bit things, where you can reduce around 2 kg, two and a half, 3 kg max. Okay, so when your BMI is more than 26, 27, then yes, definitely there should be an intervention of a proper expert, and he should take a call कि how much you have to reduce. And ये जो एक्सेप्टेंस है, ये एक्सेप्टेंस आने में आज बहुत बड़ा चैलेंज है. तो उसके बाद जो है, मोर, उसके बाद का जो चैलेंज है, दैट इज ऑल अबाउट अ माइंड. ओके, तो बहुत बार क्या होता है कि आई अंडरस्टैंड, आई एक्सेप्ट, एंड आई एग्री टू रिड्यूस वेट. ओके, पर आफ्टर सर्टन टाइम, एक वीक, 2 वीक, देन वो जो डिजायर जो रहती है ना वेट लॉस, दैट रिड्यूस. बिकॉज आइदर आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं, 1-2 किलो आप कम हो गया तो यू फील कि अरे यार हो गया. दैट इज हाउ इट हैपेंस. आइदर आपको रिजल्ट नहीं मिलते तो भी आप थोड़ा सा डीमोटिवेट होते. तो Right. इन भी चीजों में बहुत बार क्या होता है, हफ्ते 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में मैक्सिमम ये डिसकंटिन्यू हो जाता है, और ये बहुत और एक बड़ा प्रॉब्लम है. Right. इसलिए माइंडसेट is very much important when you are working on the weight, Right. and keeping them on the toes, keeping the patients engaged, keeping patients
नंबर्स मॉनिटर्ड, ये सभी चीजें एक तरीके से अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हम वेट लॉस कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं हर एक वेट लॉस के पेशेंट को बोलना चाहता हूँ कि आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, उस मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब किए बिना हमें हमारा वेट लॉस करना है। बहुत बार क्या होता है कि 10 दिन में 10 kg वेट लॉस, या ये कर लो तो उतने केजी वेट लॉस, मैंने 30 किलो वेट लॉस कर लिया, ये सभी जो हम देख रहे हैं उसके बाद उनका क्या हुआ इसके बारे में बहुत बार पता ही नहीं चलता कि है नहीं है, कहाँ है, क्या हुआ उनका। तो इसलिए मुझे लगता है कि वेट लॉस के पीछे एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। कितना वेट लॉस हम एक वीक में करना चाहिए, एक वीक में इतना वेट लॉस करेंगे तो मेरे बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और वो मेटाबॉलिकली वो सहन हो सकता है या नहीं हो सकती, सभी चीजें अगर हम बिना कैलकुलेट किए अगर हम ब्लाइंडली वेट लॉस के पीछे भागेंगे तो बहुत बार मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि नहीं, मैं वहां गया था, वो डाइट फॉलो किया था, इनके पास गया था, वो मैं कर रहा था, उसके बाद वेट फिर से गेन हो गया। ये क्यों होता है? क्योंकि वो एक सिस्टमैटिक पैटर्न हम फॉलो नहीं करते, बिकॉज बॉडी का जो सर्केडियम रिदम है, एक साइकिल है, उस साइकिल को दिमाग में रखते हुए, आपके मेटाबॉलिज्म को दिमाग में रखते हुए हमें वेट लॉस करना है। तो ये वेट लॉस का जो अप्रोच है वो बहुत साइंटिफिक होना बहुत जरूरी है। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि अर्ली स्टेज में हम यस थोड़े बहुत चेंजेस लाइफस्टाइल में करके हम ठीक कर सकते हैं, पर बहुत बार अर्ली स्टेज में हमें वो वेट गेन लगता ही नहीं। जब हम 28-30 BMI के रेंज में जब जाते हैं तभी हमें लगने लगता है कि अरे यार थोड़ा सा वेट बढ़ गया है तो आई नीड टू डू समथिंग। पर उस वक्त ऑलरेडी वो टाइम निकल चुका है कि वो खुद के खुद कुछ कर सकते हो, कि वहां इंटरवेंशन की, एक्सपर्ट की जरूरत है। तो ये सभी चीजें एक एक प्रोसेस के अंदर आती है, और इस प्रोसेस को हमें सही ढंग से अगर अप्रोच करेंगे तो ही हम सही रिजल्ट्स दे पाएंगे या ले पाएंगे। ओके, तो ये थोड़े बहुत चैलेंजेस, या आप उसको बोलिए मिथ। मिथ तो मेरे लिए वही बहुत बड़ा मिथ है कि ओबेज पेशेंट ओबेज नहीं मानता, राइट, राइट, ओबेसिटी को वो डिसीज नहीं मानता, करेक्ट। या ओबेसिटी के लिए डॉक्टर की जरूरत है ये नहीं मानता। यही बहुत बड़ी मिथ है, और यही ट्रेजेडी बोल सकता हूँ मैं कि यही बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि आज ओबेसिटी बढ़ने के रीजन, बहुत बड़ा रीजन ये है कि ओबेसिटी को मैं सीरियसली डिसीज ही नहीं मानता। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही बात कही है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओबेसिटी, मोटापा एक बीमारी है, इसे हल्के में मत लीजिए। मोटापे को हल्के में मत लीजिए, ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा यहाँ पे कि देयर आर नो क्विक फिक्सेस, शॉर्टकट्स नहीं है, कोई क्रैश मेथड नहीं है वेट लॉस का। अगर आप क्रैश मेथड से वेट लॉस करेंगे तो वो वापस आपके पास में ही आएगा, इट विल कम रिबाउंड बैक। सो ऐसा होता है, और ऐसे होने के बाद में लोग फिर हताश हो जाते हैं, थक जाते हैं, दे स्टार्ट, यू नो, दे सडनली गिव अप, and then they rebound back to much bigger weight than what they were earlier. And it is, मैं यहाँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ डॉक्टर प्रसाद। जैसे आपने बताया, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी रह चुका है। मैंने बहुत एक टाइम था, आई बहुत एग्रेसिवली डाइट करके, बहुत ज़्यादा फास्टिंग करके, बहुत एग्रेसिव मैंने वेट लॉस किया था। और जैसे ही वो एस्पेक्ट्स मेरे स्लो डाउन हुए एंड आई रीगेन्ड बैक, मेरा वो वजन रिबाउंड आया, और वो वजन वापस आते समय इतने गुस्से से वापस आया कि थोड़ा एक्स्ट्रा ही वापस लेके आया। सो इट हैपेंस। और इसीलिए योर पॉइंट कि ये प्रॉपर साइंटिफिक मेथड, एक बाय एन एक्सपर्ट हु अंडरस्टैंड्स हु योर बॉडी, हु कैन रीड योर बॉडी बेटर, हु कैन डायग्नोस योर फिजियोलॉजी, योर बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको ये समझ सकेंगे, बता सकेंगे, उनके पास में जाना बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया है डॉक्टर प्रसाद। और हर कोई अपने आप को वेट लॉस एक्सपर्ट बोलता है कि भाई ये खाओ तो आपका वजन कम हो जाएगा, ये मत खाओ तो वजन कम हो जाएगा।
ऐसे केसेस के अंदर में प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज याद रखिए कि कोई शॉर्टकट मत अपनाइए. गो टू अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट, हु इज ट्रेन्ड टू हेल्प यू विद दैट. मतलब अगर आपकी, समझो आपकी कार है, कार खराब हो गई है, तो आप खराब कार को ठीक कराने के पास में आप साइकिल मैकेनिक के पास तो नहीं लेके जाएंगे ना. आप एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर या कार के मैकेनिक के पास में लेके जाएंगे या साइकिल मैकेनिक के पास में लेके जाएंगे. आपका आप जो एक्सपर्ट है, यू हैव टू फोकस ऑन दोज एक्सपर्ट्स. सो डॉक्टर प्रसाद, this is the first episode on obesity. We are going to cover this obesity series in two parts. Now, today we have discussed about the whole concept of obesity, कि क्या है, what is the problem, what is the disease burden of obesity, and how is it affecting people. Now, next episode we will be talking about how to manage obesity, what is the right method, what is your holistic 360-degree approach of weight loss. I would also request you to share some success stories, and of course we'll be sharing tips for with our audience in that, in the next episode of obesity. But before we close our today's episode, Dr. Prasad, I want you to answer this last very important question. Very, very important question is that when we are talking about obesity or weight gain, हमने अभी बात की the basic concepts के बारे में, कि what is BMI, we have talked about what are the misconceptions, लोगों के दिमाग में क्या धारणाएं भरी हुई है, ये सारे हमने पॉइंट्स समझे. बट व्हाट आई वांट यू टू टेल अस इज दो चीजें हैं डॉक्टर प्रसाद. पहला, कि इंडिया में, आज के डेट में इंडिया में या ग्लोबली भी हम देख सकते हैं, ओबेसिटी की जब हम बात करते हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी, देर ऐसे सबसे बड़े जो कारण क्या है, व्हाट आर द फिगर्स फैक्टर्स आज के डेट में ओबेसिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस से आप वो बताइए कि क्या ऐसे बड़े फैक्टर्स हैं. और दूसरा, वेट गेन होने के बाद में कॉम्प्लिकेशंस क्या आती है. मैं डराने के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं लोगों को आप जो मेरा जो ऑडियंस हम देख रहे हैं, उनको डराना नहीं है, बट उनको ये पता होना चाहिए कि मेरा वजन बढ़ रहा है तो मेरे शरीर पे उसका क्या इफेक्ट और कैसे इफेक्ट पड़ रहा है. ये दो पार्ट्स है. सो डॉक्टर प्रसाद, प्लीज प्लीज हेल्प अस विद दीज टू थिंग्स, कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉज वेट गेन as per your experience in your experience dealing with patients today. And the second thing is that I want you to tell us what are the complications that your patients face after they gain the weight. So over to you, Dr. Prasad. ओके, बहुत कॉमन चीज है रीजंस. आज तो पीपल ऑल नो इट कि my concern about obesity, if you ask me, that is, people are having a lot of information, right? बट इफ यू आस्क, आज कोई एक्सपर्ट से भी ज्यादा आज पब्लिक के पास या नॉर्मल लोगों के पास उसके रीजंस क्या है, पॉजिटिव फैक्टर्स क्या क्या है, उसके बारे में आज उनके पास इंफॉर्मेशन है. तो एज ऑल वी नो दैट कि डाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टिंग फैक्टर टू बिकम फैट. ओके, या आपका जो ओवरऑल वेट गेन है वो आपके डाइट के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वॉट एवर यू पुट इनसाइड अकॉर्डिंगली उसका वो आउटपुट है कि आपका वेट बढ़ेगा, वो उतना ही रहेगा या कम होगा. सो ऑल इट डिपेंड्स. तो आज के दिन में हम जो खाना खा रहे हैं, जो आई ऑलवेज टेल दैट टू माय पेशेंट्स इज, एक तो हमारे हाथ में बहुत कम है, लिमिटेशंस, बहुत लिमिटेशंस है कि अच्छा उगाया हुआ जो धान है उससे बनाई हुई रोटी आज मुझको मिलना, ये कितना मतलब डिफिकल्ट चीज है आज के डेट में, वो हम सभी को पता है. बट फिर भी जो हमारे हाथ में है उसके अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूं, ये अगर हम सोचे तो बहुत सी चीजें हम चेंज कर सकते हैं. तो डाइट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर विच इम्पैक्ट योर इम्पैक्ट ऑन योर वेट. ओके, तो सेकेंड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज अगर आप ना करते नहीं करेंगे तो यस,
आज के दिन में कोई भी कैटेगरी, जॉब कैटेगरी आप देख लो, तो उसमें मैक्सिमम आवर्स ये सेडेंटरी में जाते हैं। तो इस चीज को अगर हमें कॉन्शियसली चेंज करना है तो वी हैव टू टेक सम गुड एक्शंस। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नॉन एक्सरसाइजिंग माइंडसेट या बॉडी की जो आदत है, तो वो अगर नॉन एक्सरसाइजिंग है तो ये बहुत घातक है, कंसिडरिंग ओबेसिटी या वेट गेन के को हम दिमाग में रखेंगे। सो ये दो चीजें हो गई। थर्ड थिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है आज मेंटल स्ट्रेस। ओके, तो मेंटल स्ट्रेस अगर मैं कंसीडर करूंगा तो आज ईच एंड एवरी वन इज हैविंग मेंटल स्ट्रेस। बहुत बार मेरे मुझे पेशेंट्स ऐसा ही पूछते हैं कि डॉक्टर फिर टेंशन नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा। तो आई ऑलवेज टेल, स्ट्रेस इज नॉट अ प्रॉब्लम। स्ट्रेस मैनेज करना, स्ट्रेस को किस तरीके से हमें डील करना है, दैट इज अ प्रॉब्लम। और उसके लिए एक कॉन्शियस माइंड होने की जरूरत है, और वो कॉन्शियस माइंड एक कामनेस से आता है। वो कामनेस अगर मुझको रीच करना है तो उसके लिए कुछ लाइफस्टाइल में, मेरे डेली रेजिम में कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके वो मेरा माइंड काम होगा, डिसीजन क्वालिटी बढ़ेगी, डिसीजन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, तब स्ट्रेस को मैं मैनेज कर पाऊंगा। और स्ट्रेस अगर सही ढंग से मैनेज हो गया तो प्रोबेबली वो मेरे हेल्थ के ऊपर या मेरे वेट के ऊपर इम्पैक्ट कम डाल सकता है। तो ये मेजर तीन चीजें हैं जो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि आहार, विहार और विचार, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आहार मतलब डाइटरी थिंग्स इम्पैक्ट्स योर वेट गेन, नॉन एक्सरसाइजिंग विल इम्पैक्ट ऑन योर वेट गेन, or mental stress, rather managing, rightly managing the mental stress will impact on your weight gain। इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट और एक चीज आती है, दैट इज स्लीप। ओके, अगर आपका स्लीप, आपकी अगर स्लीप सही ढंग से नहीं है या प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर इन टर्म्स ऑफ टाइम एज वेल एज अ साउंड स्लीप, ये दोनों के लिए है कि अगर वो प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली वो भी एक इम्पैक्ट फैक्टर है कि जो आपका वेट गेन हो सकता है। ये मेजर चीजें हैं। हर एक आहार, विहार, विचार और निद्रा, इन चारों के अंदर अगर हम जाएंगे तो और डिटेल में इसके रीजंस, इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो रीजंस हो गए। उसके अलावा यू आर आस्किंग मी अबाउट कॉम्प्लिकेशंस। यस, देयर आर लॉट ऑफ Right. कॉम्प्लिकेशंस। वी कैन डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल प्रोबेबली नेक्स्ट एपिसोड। पर व्हेन वी जब मैंने एपिसोड शुरू किया तब से मैं एक चीज बताते आ रहा हूँ कि इट इज अ मेन गेट फॉर ऑल मेजर डिसीजन। इवन आप कल को मुझे बोलेंगे कि ओबेसिटी से कैंसर होता है तो भी ये गलत नहीं हो सकता, बिकॉज देर आर इंसिडेंसेस हैव सीन। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायबिटीज, हाइपरलिपिडेमिया हो गया, कोलेस्ट्रोलेमिया हो गया, आपके थायराइड के प्रॉब्लम ओबेसिटी से बढ़ सकते हैं। आप हाइपरटेंशन मतलब जो बीपी की बीमारी जो बोलते हैं, के साथ वैस्कुलर डिसीजेस, वेयर एंडोथेलियम डिसफंक्शन हम बोलते हैं, वैस्कुलर अलग 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 धमनियों की बीमारियां वो हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्रेटनिंग जो है वो है हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज के थ्रू आज कितने लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो इसका मेजर रीजन है। तो ये सभी चीजें हो सकती है अगर आप एक if Right. to close this talk, if you are able to maintain or manage your weight, if you are able to reduce, if it is high, if you are able to reduce, then definitely you are preventing the major disorders or major complications. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डॉक्टर प्रसाद।
आहार विहार विचार निद्रा, ये चार एस्पेक्ट्स हैं. These are the whole aspects, foundations of holistic health. My dear friends, जो आप देख रहे हैं, you are seeing. Today we have discussed the basic fundamentals behind obesity. In the next episode, we are going to cover all these four fundamentals and a lot more about obesity, weight loss, how you can lose your weight, what is the 360-degree holistic approach to losing weight. जहाँ पे आहार, that is your diet, vihar, that means your how you are, your lifestyle is, मतलब physical activity आपकी, ओवरऑल हेल्थ के ऊपर में विचार, योर मेंटल हेल्थ, and your stress management. Plus, we will be talking about sleep, sleep hygiene. We'll be talking about a lot more of these in the next coming episode. So, Dr. Prasad, thank you so much. आज आपने अपना बहुत वैल्यूबल टाइम दिया है. आई नो इट इज, यू हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल. बैंगलोर में आपका जेपी नगर में जो क्लिनिक है, वहाँ पे आई बिलीव यू हैव अ फैंटास्टिक टीम ऑफ डॉक्टर and Panchakarma therapists and patients. So great efforts already going on. Thank you to your team for taking care of the patients while we are recording today's episodes. And Dr. Prasad, hats off to you for your efforts. As a friend, also मैं हमेशा आपके साथ में as a friend I have always appreciated working with you, talking and discussing with you. पर आज के जो एपिसोड है बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ये टॉपिक जो है वेट लॉस या ओबेसिटी या वेट गेन की हम बात करें, ये सब में देखा जाता है. इंडिया के हर पार्ट में देखा जाता है. नॉर्थ में जाओ, आप वेस्ट में जाओ, साउथ में जाओ, वेदर यू गो टू ईस्ट, देयर इज वेट गेन, पॉट बेली इज देयर एवरीवेयर. तो हम इसमें और डिटेल में भी चर्चा करेंगे इन आवर कमिंग एपिसोड. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रसाद फॉर योर टाइम एंड योर एफर्ट्स टुडे. माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे आज हम जुड़े हुए हैं, होलिस्टिक हेल्थ 360 degrees. So 360 degrees, how is it that you are going to take care of your health in a holistic manner, looking at everything, all the aspects of it. So holistic 360-degree health podcast, that is by Dr. Prasad. We thank Dr. Prasad for taking this initiative to start this podcast. और आज के इस एपिसोड को यहाँ एंड करते करते मैं हमेशा की तरह आपको ये बोलूंगा, माय डियर फ्रेंड, लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए and spread this around. So like, share, follow us, subscribe to this channel so that you know when we drop the next episode. और आज का दिन 26 जनवरी आपको बहुत बहुत आपके लिए अच्छा जाए. इंडिया गेन्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क. बट आज के इस एपिसोड को एंड करने के पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप भी आज अपने ठान लीजिए कि आप अपनी लाइफ में एक और लैंडमार्क लेके आने वाले. टुडे इज द डे व्हेन यू डिसाइड that you have to start taking the right actions towards losing your weight and regaining your health quality. So start focusing on those things. Till our next episode, my dear friend, we'll be covering in the part 2 of this obesity episode. Till that time, I'm your friend and host Dr. Aman Kapoor signing off. Thank you. स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा. Stay healthy, fit and fine. Till this next episode. Bye bye. See you. Thank you. Thank you, Dr. Prasad. Thank you very much.